हेलो गाइस, तो अभी हम आ रखे हैं फॉर्मूला 11 में, यहाँ सेक्टर 18। और ये है पीछे ट्रैक। लास्ट टाइम भी आया था, मैं चलाई थी, लेकिन उस टाइम मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। तो मैं अपने भाई के साथ आ रखा हूँ और अभी हम जाएंगे ट्रैक पे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, लेकिन ट्रैक बहुत प्यारा है। ये देखो, तो मैं हेलमेट कैम लेके आया था हूँ। हेलमेट कैम लगा के आपको रेस दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कौन से सबसे फास्टेस्ट है। चलो, एक फ्रेंड और आने वाले हैं, निमिश वाले को, जो पहले आ चुके हैं चैनल में, तो वो भी आएंगे। तो चलो उनसे रेट वेट पूछ लेते हैं। भाई पहले आए कस्टमर्स को, न्यूली मतलब जो नए रेसर्स होते हैं उनको रजिस्टर करना पड़ता है, तो वही कर रहे हैं। मेरा पहले से इधर रजिस्टर्ड है शायद से। क्विकली गो टू द ट्रैक। तो आज वीकडे है, तो यार हमने डे 2 सेशन, लाइक इन टोटल 4 सेशंस, 10 मिनट्स ईच। ब्रेक्स हैं वीकडेज और वीकेंड्स के। तो यार ये सब है पेट्रोल ऑपरेटेड कार्स। तो कार पे जाते हुए कौन सी ब्रो? हाँ, कंटिन्यू नहीं चलाना यार, 10-20 मिनट्स का। हाँ, तो ओ भाई बहुत गर्मी। और लेट्स गो। I'm gonna fucking destroy you.
I'm gonna fucking destroy it.
सेशन कंप्लीट। पूरा हाथ जाम हो गया ये। फास्ट। अच्छा मुझे बहुत लेट में रियलाइज हुआ कि इस वाले की मुझे ब्रेक मारने की जरूरत नहीं, मैं इसको फ्लैट आउट ले सकता हूँ। हाँ फ्लैट आउट, वो भी फ्लैट आउट है उस नहीं भाई मैं वो फ्लैट आउट है। लास्ट टाइम ना स्पिन हो गया पूरा। फ्लैट आउट है वो, जो पोल है ना वहाँ पे, उससे करीब 5-10 मीटर पहले तुझे ब्रेकिंग मारनी पड़ेगी 3-4 बार। ये सब रिकॉर्ड करने हाँ हो रहा है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो हेलमेट अभी तक 10 मिनट हो रहे हो ना। हाँ 10 मिनट और है अभी, थोड़ी देर थोड़ा रेस्ट करते फिर आते। कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस? ब्रो वेरी थ्रिलिंग, एड्रेनलिन रश जो, और मतलब उसमें जो ग्रिप है वो नॉर्मल कार से बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे नॉर्मली मैं फर्स्ट 2-3 लैप कैसे मार रहा था कि एकदम पास से जा रहा था आराम से, देन मुझे रियलाइज हुआ शिट मैं तो रेसिंग कर रहा था, मैं आउटर लाइन से अंदर कट कर रहा था। बस फन, मज़ा आया। बैठते थोड़ी देर